A very warm welcome to all of you on the occasion of the National Youth Day, the 160th birthday celebrations of Swami Vivekananda ji. I extend a very warm welcome to our chairman, sir, Dr. S.C. Vats, our vice chairman, Shri Vineet Vats, our director general, Dr. Ashwini Kumar Sharma, Professor Subba Rao, chairperson, VSLLS, Professor Siddharth Mishra, chairperson, VSJMC, VRC and VSIT, our principal, Professor Anuradha Jain ma'am, director, Professor Goldie Gabrani, our CEO, Dilip sir, our deans, faculty, staff, and students. Today, 12th January is celebrated as the National Youth Day, and this is also the Founders' Day for our institution, Vivekananda Institute of Professional Studies, Technical Campus, named after Swami Vivekananda ji, a monk, prophet, and pathfinder. It is great to be a part of this celebration as we are here today to rejoice in the glory of Swamiji, who is an inspiration for all of us. I now invite our chairman, sir, our vice chairman, sir, our director general, and our chairpersons, Professor Subba Rao and Professor Siddharth Mishra, to offer their floral reverence to Swamiji and light the lamp. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दना दीपहर्तु महापापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्जनार्दना दीपहर्तु महापापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. The lamp before Swamiji is here to dispel the darkness, as Swamiji dispelled the darkness by becoming a lamp himself, truly personifying Lord Buddha's dictum which says, Atmo Deepo Bhava. We all have within us that potential to be the source of light, not only for ourselves, but also for those around us. And Swamiji was the light not only for the people around him, but for the entire world. Asto ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityo ma amritam gamaya. From the unreal, he has led us to the real. From darkness, led us to light, and brought to us humanity. His light of knowledge and wisdom has spread out and enlightened the world. स्वामी जी की पूजा और अर्चना थी बस भारत माता ही, भारत की संस्कृति के ध्वज को जिसने यूं फहराया हो, जिसके कारण स्वाभिमान जनमानस में गहराया हो, आओ मिलजुल आज मनाएं उनकी पावन जन्मतिथि. The Ramakrishna Mission Aarti, which is a Sandhya Aarti of Belur Math, is presented here today by the students of Antrakshar team. We are here today to sink in the depth of music. So let's soak ourselves in the spirituality.
was truly mesmerizing. Music in any language is as sweet. This Aarti in Bangla showcased how sweet and eloquent the mother tongue is. Indeed, a soul-stirring rendition. To set out the tone of this event, its understanding and significance, to let you know the purpose, the importance, and the relevance, to take you to the saint, his preaching and his guidance, to let you delve deep in his learnings and his fragrance, bringing to you Swamiji's philosophy to get its true essence, Dr. Tushita Sharma from VSLLS would bring to us some teachings of Swamiji and his role in spreading the message and relevance of the Vedanta philosophy. The word Vedanta is a combination of two words, Ved and Ant. Ved is the record of the spiritual truths and the means of attaining them, as well as knowledge of truth in the abstract. Anta means either the end or goal. It also means the inner core or essence. Vedant therefore means either the inner essence of all the Vedas or the end or goal of all our knowledge. I now invite Dr. Tushita. My namaste to all present here today. Thank you, Saloni ma'am, for giving an introduction on the idea of the Vedanta. I would thus not like to repeat what has already been spoken, but talk about the link that the East and the West made through the great saint Swami Vivekananda. Dating back thousands of years, Hinduism is one of the oldest spiritual paths. For millions, it is a way of life, multi-layered and diverse. Hinduism has always been a rich source of wisdom over the ages, and Swamiji, the great reformer and spiritual leader, in his short but large life, was a key figure in introducing this philosophy to the Western world. Swamiji has been an inspiration to people globally. He stood for fearlessness and human excellence. I, Tushita, stand before this solemn gathering in reverence to Swamiji and to celebrate VIPS Founders Day as also the National Youth Day. I wish to share amongst all of you some teachings of the great saint which inspire, which motivate and guide in testing times. Swamiji very strongly believed in the youth, and he asserted on the realization of one's own worthiness, the Atma Mulya, he called it. He said, and I quote, "You are a child of a wondrous universe, born to express something unique. Never doubt that," unquote. He said that this secret deep within will catalyze the self-power in all that one does in life. Throwing out the habit of constant self-doubt is an essential towards success. Swamiji also stood with the idea of being undisturbed. He symbolized undisturbed and infinite soul power in the face of all of life's troubles and anxieties. On numerous occasions, Swamiji was extremely provoked by his opponents. But despite their best efforts, Swamiji always remained deeply undisturbed. He was often heard saying to his brother monks, "It is not right to disturb your inner peace just because of an outward disturbance. Let the outward disturbance be an external. Do not let it become internal." This is the secret that he gave of balance in temperament and focus in action. In the Vedanta,
being inwardly disturbed is described as a state of unconsciousness or a state of sleep. And non-disturbance is born out of a sense of inner alertness. With these words, I would like to conclude by bowing to the sound of the universe, Om. Omkaram bindu sanyuktam nityam dhyayanti yoginaha kamadam mokshadam chaiva omkaraya namo namaha. Namaste. Thank you, Tushita, for bringing to us on this platform today the gems of wisdom from Swamiji's life and his teachings of Vedanta philosophy. We at VIPS are blessed to have the complete work of Swami Vivekananda in 9 volumes and also the 10-volume Vivekananda Sahitya in our library. And I hope we do take a delve into these volumes someday, if not done as yet. Music is the elixir of life, seeping through our ears, reaching our hearts, and touching our souls. It rejuvenates and refreshes our minds. I now invite Ms. Kanchan Lavanya, faculty from VS LLS, for the bhajan Ghar Chalo Man. Kanchan, who has been a student and now a faculty of VS LLS, has lived in the cultural ethos of this temple of learning. So please, Kanchan Lavanya. आप सभी को सादर प्रणाम और स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं वर्षगांठ पर आप सभी को शुभकामनाएं और यहाँ उपस्थित सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की भी शुभकामनाएं। यूँ तो नरेंद्र नाथ दत्त ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे और ब्रह्मो समाज के सभी सिद्धांतों से वो वाकिफ़ थे और मानते थे नारी स्वतंत्रता में और नारी शिक्षा में, बट फिर भी कुछ ऐसा था जो उनको लगता था कि अपूर्ण है। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहा करते थे कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर को अनुभव नहीं कर पा रहा। उनके दोस्तों ने उन्हें कहा कि आपको देवेंद्रनाथ ठाकुर जी से मिलना चाहिए और जब वो देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिले, उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। एक दिन उनकी कक्षा में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता दी एक्सकर्जन पढ़ा रहे थे और वो समझा रहे थे कि किस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के और स्वयं के बीच का अंतर भूल जाते हैं, तो वो प्रश्न करते हैं कि क्या ये हमारे लिए भी संभव है? विलियम हेस्टी इसका उत्तर देते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ जिसके लिए ये संभव है, वह है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। फिर क्या था, स्वामी विवेकानंद अपने मित्रों के साथ उनसे मिलने गए और मुलाकात पर उनके मित्रों ने नरेंद्र जी का जब उनके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सुंदर गाते हैं। तो पहली मुलाकात में नरेंद्र जी ने जो भजन गाया उसको सुनकर रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो गए और कहने लगे कि तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो, इतना समय क्यों लगा दिया मुझसे मिलने के लिए। और ये भजन उन्हें सुनाया गया। ये भजन मैं आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये भजन कहीं ना कहीं आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसको परिलक्षित करता है। भजन कुछ इस प्रकार है। घर चलो मन आज ही अपने, घर चलो मन आज ही अपने, छोड़ करके मनोहारी कांच के सपने, घर चलो मन आज ही अपने। ये जग बिल्कुल पराई चादर, शान झूठी मान झूठा खेल है पल भर, शान झूठी मान झूठा खेल है पल भर। थके हो तुम रहे हो तापते तपने, घर
चलो मन आज ही अपने। जी नहीं लगता घर की याद तड़पाती है, वहाँ पर माँ के लिए बहुत अकुलाती। जी नहीं लगता घर की याद तड़पाती है, वहाँ पर माँ के लिए बहुत अकुलाती। द्वार का वो दीप जलता लगा है दिखने, घर चलो मन आज ही अपने। घर चलो मन, घर चलो मन आज ही अपने। धन्यवाद। Thank you so much, Kanchan. Each facet of Swamiji's life gives us immense learning. Now we have Sachin, a student from VSJMC, who will present a shloka on Swamiji's life. पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीयों को नमस्कार करता हूँ। आज हम सागर रूपी ज्ञान मूर्ति स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं। स्वामी जी के ज्ञान का वर्णन कुछ पन्नों या किताबों में नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ज्ञान और उनका नज़रिया उस आकाश की तरह असीमित है जिसका छोर कहीं दिखाई नहीं देता। हम सब उनके जीवन से भली भांति परिचित हैं, तो आज हम उनकी जीवन यात्रा की चर्चा करने के बजाय उनके द्वारा कही गई बातों के माध्यम से उनके दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक श्लोक कहने जा रहा हूँ जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रचित अम्बा स्तोत्रम से मैंने लिया है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। का त्वं शुभ करे सुख दुख हस्ते, अघूर्णिता भवजलम प्रबलोर्मि भंगे, शांति विदातु में किम बहुधा विभर्गमे, मता प्रत्न परमासी सदैव विश्वे। अर्थात, ओ प्रेममयी माता, आपके दोनों हाथों में सुख और दुख है। आप कौन हैं? इस भौतिक विश्व में उमड़ती और छलछलाती हुई सागर की लहरों जैसी आप बिखरे हुए विश्व को पुनर्निर्मित करने का शांतिपूर्ण प्रयास करती हैं। यह श्लोक स्वामी जी के मनोभावों को बखूबी बयां करता है। स्वामी जी के श्लोक हमारे मन को शांति से भर देते हैं और मन में एक अलग ही प्रकार के उत्साह का संचार करते हैं। निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकता हूँ कि स्वामी जी के ज्ञान का वर्णन करना गागर में सागर भरने जैसा है। अगर स्वामी जी आज हमारे बीच होते तो वह हम सबको संबोधित करते हुए एक ही बात कहते, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्नि बोधता। उठो, जागो और आगे बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू सचिन। एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिसके मन में करुणा थी, वह नरेन से बना विवेकानंद। तभी इस जग ने जाना, इनकी प्रतिभा इनकी मेधा का सबने लोहा माना। इन्होंने इस दुनिया को बतलाया, एक देश है भारत भी। भाई बहन का संबोधन जब इस जग में ने पहली बार सुना, अमेरिका की धर्म सभा का गूंज उठा कोना कोना। थमी नहीं तालियां देर तक उनकी ऐसी धाक जमी, गीता नहीं देश के युवक, पहले तुम फुटबॉल चुनो, मन में संवेदना जगाओ, तन से तुम चट्टान बनो। वह कहते थे ऐसे युवकों से ही इस देश की सूरत बदलेगी। Celebrating the National Youth Day today, we have a song बेसब्रियां and जीते हैं चल by झलक भार्गव from VSLLS, and accompanying him on guitar we have Pratham Arora from BCA.
Hello. रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना अब जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों में तेरे बादल झुकेंगे, कदमों में तेरे बादल झुकेंगे। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी ये प्यास है। क्यों रोकना अब जाना कहाँ, चाहे वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। तलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। मिट्टी में जिंदा सी खुशबू है, कहती है आजा कल को पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल 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 जीते चल। थैंक यू। Thank you. We look at our human life so full of stress and strife, laden with burden and conflict to bother us and afflict. But when the philosophy of Swamiji touches our soul, we forget our sufferings and focus on our goal. Swami Vivekananda ji has the power to deeply influence each one of us here in the true sense. His teachings we need to seek. It will give us courage and not make us meek. I invite Radhika, student from VSJMC, who would share with us some inspirational quotes and speak on the influence and relevance of these quotations in the lives of the youth today. Good afternoon to everyone present over here. Swami Vivekananda was a great believer in the potential of the youth. As we celebrate the Youth Day as our Founders' Day, he remains inspirational and relevant for our ages. He urged the Indian youth to educate themselves and emphasized how service should be the focus of their lives. He once said, "It is a privilege to serve mankind, for this is the worship of God. God is here in all these human souls.
He is the soul of man. Today, I will talk about forever relevant teachings of Swami Vivekananda. He once said, "If the poor cannot come to education, education must reach them at the plough, in the bakery, factory, or elsewhere." He believes in taking education to the needy. It inspires us to educate each and every child wherever they are. While many people inspired by Swami Vivekananda have dedicated themselves to education, poverty elevation, and other forms of social service, ordinary well-to-do Indians can do their bit by helping those who are directly involved in such missions. Here, he is also emphasizing on skill enhancement, which will help them in capacity building and serve them in this modern era. Making a difference through crowdfunding. Crowdfunding, which is considered as the current phenomena to raise funds. He founded the Ramakrishna Mission in the service of mankind and to lift the oppressed masses of the country, and used crowdfunding to raise funds for this mission. For ordinary citizens who see Swami Vivekananda as an inspiration but cannot take time out of their everyday lives to do their bit for the society, can do crowdfunding. Be the best version of yourself. Learn everything that is good from others, but bring it in. In your own way, absorb it and do not become others. Swami Vivekananda propagated the idea of individuality. You need to question what you hear, analyze it, and then incorporate it into your life. He was completely against any sort of blind adherence, but propagated the idea that we all are different from each other, and thus we all have an individualistic perspective of looking at various things. At last, be courageous in the face of troubles. If you ever feel afraid, always turn around and face it. Never think of running away. Swami Vivekananda emphasizes on the acceptance of life that consists both of the good and bad. And one needs to be strong enough to sail through the bad days and wait for the good ones to come. All the bad, you need to fight it. Fight against all the troubles and hardships. Swami Vivekananda also believed that if you wish to live your life to the fullest, you need to face everything that comes your way and never run away from it. Isn't this an important life lesson and something which we all need to practice today and really make a difference in this world? We must imbibe his values and take them further. Thank you. Thank you, Radhika. We now have Professor Mamta Madan from VSIT, who has been with VIPS for almost 22 years now, seeing it grow from a seed to a sapling to the huge banyan tree that it is now, living with the tradition of what the institution is all about. She will present Sangathan Sutra, which is originally in Mahayana Buddhist scripture, later translated into Sanskrit and many other languages. This sutra basically means that what is connected are sentient beings, and they are joined or connected by the Sangathan to enlightenment. Mamta ma'am, please. आदरणीय चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैडम, डीजी सर, चेयरपर्सन्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, डीन्स, डायरेक्टर्स और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान और विद्यार्थियों, आज हम सब स्वामी विवेकानंद जी का 160th बर्थडे मना रहे हैं, जो कि राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जिनका संदेश है अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। किसी भी गोल को पूरा करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ की ज़रूरत होती है, और पुरुषार्थ अगर संगठित होता है तो सक्सेस हमेशा मिलती है। जैसा कि हमारे चेयरमैन सर हमेशा हमें कहते हैं कि हम सब विप्स में संगठित होकर कार्य करें, तभी हम उन्नति कर पाएंगे और देश की भी उन्नति कर सकेंगे। तो इसी पर एक संगठन सूत्र है जो संस्कृत में है।
अगर मेरी कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा. आई विल जस्ट गिव इट अ ट्राई. थैंक यू. आसं समिध्युवसे वृषङ्ने विश्वानर्या आयलस्पते समिध्यसे स नो वसून्या भर. हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को. हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को. वेद सब गाते तुम्हें है कीजिए धन वृष्टि को. वेद सब गाते तुम्हें है कीजिए धन वृष्टि को. आसङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्. आदेवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते. प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो. प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो. पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य की मानी बनो. पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य की मानी बनो. समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनसः चित्तमेषां. समानं मन्त्रमभि मन्त्र एवः समानेन वो हवि शाजुहोमि. हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो. ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पासब नेक हो. ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पासब नेक हो. समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति. हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा. हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा. मन भरे हों प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा. मन भरे हों प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा. मन भरे हों प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you. Words, simply words, often fail to carry the intensity of feelings and devotion, but when rendered in the strings of music, they add to the rhythm of life. I now invite Professor Rashmi Salpekar, Dean VSLLS, for the rendition of a bhajan, which I am sure would transcend you to the spiritual world.
जगदम्ब जगदम्ब सुरनरमुनि सुमिरन्ता जगदम्ब जगदम्ब सुरनरमुनि सुमिरन्ता सनमुखस्तुतिकदन्त सहस्रशिरिदावन्त शिरदन्त हररङ्ग शिरदन्त हररङ्ग नाचता है श्रीरंब जगदम्ब जगदम्ब सुरनरमुनि सुमिरन्ता सनमुखस्तुतिकदम्ब सहस्रशिरिदावन्त शिरदन्ताररङ्ग शिरदन्ताररङ्ग नाचता श्रीरम्ब जगदम्ब जगदम्ब वादन्त नारद वादन्त नारद वादन्त नारद वीणा विशारद विष्णु वेणु हर ब्रह्मा विदांग सब मेल निरदन्त सब मेल निरदन्त कोटि सूर्य चन्द्र बिम्ब जगदम्ब जगदम्ब सुरनरमुनि सुमिरन्त जगदम्ब जगदम्ब निरे गमद नि सारे गरे मगरे सारे नि सा नि द नि द द प म प प म ग ग नि द प म म म ग रे सा 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 म म म म म ग नि द सा नि रे 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 सा जगदम्ब जगदम्ब सुरनरमुनि सुमिरन्त जगदम्ब जगदम्ब Thank you. And you cherished our souls by singing this beautiful song. How solacing the rhythm and the beat still lingers on. We all are learners throughout our lives, and the teachings of Swamiji, his life lessons are everlasting for all of us. At any age of our life,
We all are his students. So I now invite our Director General, Dr. Ashwini Kumar Sharma, to speak on the teachings of Swami Vivekananda for the students. नमस्ते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने आसीन सभी सम्मानीय गण, मेरे साथीगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 100 जन्म वर्षगांठ पर स्वामी विवेकानंद को कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबको बधाइयाँ देता हूं। बधाई मैं इस बात की देता हूं कि हम उस संस्था में काम कर रहे हैं, ये हमारा सबका सौभाग्य है, जिसके कण कण में, जिसके नाम में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ लिखा हुआ है। और हम उन्हीं के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए हम इस बात पे पूरा ध्यान देते हैं, जो कि हमारे एक मिशन का पार्ट भी है, जिसको हम कहते हैं मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग। और यही एक ऐसी चीज़ थी जिसको स्वामी विवेकानंद ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसको कैरी किया, इसको आगे बढ़ाया। और वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न कंट्री को, वेस्टर्न पार्ट को इस बात का फील कराया कि जो वेदांत है वो बेसिकली हमारी देन है, जो योगा है वो हमारे देश की देन है। वो उस समय योगा का एक प्रचलन चला और वही आगे बढ़ के आज के दिन में हम उसको योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1984 में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि स्वामी विवेकानंद जी, जिनका कि जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, उस दिवस को हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे कि हम उनका जन्मदिन, नेशनल यूथ फेस्टिवल, और या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। हर साल इस दिवस का कोई ना कोई थीम होता है, और इस बार का जो थीम लिया गया है वो लिया गया है कि उसका थीम इस बार ये लिया गया है कि युवा जागो, सॉरी, इसका जो थीम लिया गया है वो यही लिया गया है कि यदि युवा जागृत हैं तो देश आगे बढ़ेगा, देश जागृत है। और जहाँ तक स्वामी विवेकानंद जी की आप जीवनी जब पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने कई इस तरह की सीखें, कई अपने एग्जाम्पल्स को कोट करते हुए लिखा है। और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी जो बात, जो कि मेरे से पूर्वज जितने भी वक्ता रहे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कही थी वो यही थी, उठो जागो, जब तक मत रुको जब तक कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हो। एंड आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। स्वामी जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्ता था, और आप जब कक्षा में पढ़ते थे तो उन्होंने अपनी जितनी भी अपने शिक्षा या जो हमें सीख दी है वो उन्होंने अपने लर्निंग से दी है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पहले प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते थे और उसके बाद वो उसको आगे बढ़ाते थे। जनरली होता ये कि हम ज्ञान तो सबको दे देते हैं पर खुद के ऊपर कभी उसको लागू नहीं करते हैं। तो उन्होंने टिपिकली 4-5 चीज़ें बताई जो विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और उन्होंने अपने जीवन में, अपने युवा काल में उस चीज़ को अपनाया। तो उन्होंने अपना एक किस्सा लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार वो जब क्लास में, मैथ्स की क्लास में थे, और उस क्लास के अंदर जब बच्चे बात कर रहे थे तो टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा जिसका कि कोई भी प्रश्न का जवाब कोई स्टूडेंट नहीं दे पाया। जब नरेंद्र नाथ जी का, जो कि स्वामी जी थे हमारे विवेकानंद जी, जब इनका नंबर आया तो इन्होंने उसका जवाब दिया। तो टीचर को ऐसा लगा कि शायद ये क्लास में पढ़ रहे थे, बाकी लोग बातें कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप सब अपनी अपनी स्टूल पे खड़े हो जाइए और नरेंद्र तुम नीचे बैठे रहो। और उसके बाद थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि नरेंद्र नाथ जी जो स्वामी जी थे वो भी खड़े हो गए। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों खड़े हो गए हो,
तो उन्होंने कहा कि साहब एक्चुअली बात तो यही है कि मैं भी बात कर रहा था, पर मैं बात करते करते आपके पढ़ाई दी हुई शिक्षा को भी सुन रहा था, इसके लिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। तो उन्होंने पहली चीज़ ये सिखाई कि विद्यार्थियों को अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। एक उन्होंने बताया कि कोई भी काम करना हो, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हों विद्यार्थी जीवन में, तो वो हमें एक एकाग्रता और फोकस होकर करनी चाहिए। उसका भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया, बताया कि अमेरिका में जब एक बार वो टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो अंडों के छिलके होते हैं उसके ऊपर शूट कर रहे हैं बार बार, और बार बार वो निशाना उन पर हिट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर जब उनसे देखा नहीं गया तो उन्होंने वो बंदूक ली और कहा लाओ मैं शूट करके दिखाता हूँ, और उन्होंने 12 बार शूट किया और 12 बार उन्होंने एग शेल को टच किया, उसको ब्रेक किया। तो जब बच्चे थे वहाँ के अमेरिका के, उन्होंने पूछा कि क्या आप शूटिंग जानते हैं या आपने इसमें कोई शिक्षा प्राप्त की है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ अपना फोकस और अपनी एकाग्रता रखते हुए इन पे शूट किया था। तो उनका कहने का यही तात्पर्य था कि जो भी कोई हम एक्टिविटी विद्यार्थी जीवन में करते हैं, हम उसको बड़े तरीके से करें और उसको फोकस होके करें। एक उन्होंने बताया कि हमें सच्चाई के प्रति फाइट करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि यदि हमारे सीनियर्स ने कभी कोई ऐसी बात कही तो हमें डेफिनेटली इसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए यदि आपको लगता है कि वो गलत है। और उन्होंने इसका अगेन एग्जाम्पल दिया अपनी जीवनी में कि जब वो ज्योग्राफी की क्लास में कोई प्रश्न का उत्तर उनसे पूछा गया और उन्होंने जब उत्तर दिया तो शिक्षक ने उस प्रश्न के उत्तर को पता नहीं किस कारण से मना कर दिया कि गलत है, परंतु उन्होंने उस बात को स्वीकारा नहीं और पुनः उन्होंने 2-3 दिन बाद जब वो शिक्षक से मिले उन्होंने उसका दोबारा जिक्र किया और टीचर ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि हाँ तुमने जो उत्तर दिया था सही था, मैं गलत था। और उससे एक सीख ये मिली कि हमें वी कीप ऑन फाइटिंग फॉर द ट्रुथ। एक उनका बार बार यही था कि पाने से ज़्यादा जो जिसको मिलता है उससे ज़्यादा बांटने में सुख मिलता है। और ये चीज़ मैंने भी यहाँ देखी इस संस्था में कि जो हम चीज़ें देते हैं वो बड़ी मतलब बियॉन्ड लिमिटेशन आई मीन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और उसका एग्जांपल उन्होंने एक बार बताया कि वो एक बार जब कहीं घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग को जिन्होंने 3 दिन तक अपना जो भी एक्टिविटी की उसमें उनको थोड़ा सा भूख लगी, उनको लगा कि कोई ऐसा नहीं था जो उनको दे सके। जब उन्होंने कोई रोटी किसी ने उनको दी तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि उस आदमी को कितनी खुशी हो रही थी। उन्होंने पूछा भी कि आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है, तो उन्होंने यही कहा कि किसी को लेने से ज़्यादा उसको देने में जो खुशी होती है वो कहीं नहीं हो सकती है। एक सबसे जो उन्होंने बात कही मानवता, जो कि हमारी संस्था में भी हम इस चीज़ का बड़ा एटलीस्ट हम अपने अध्यक्ष महोदय से जब भी मिलते हैं इस बात का बड़ा जिक्र होता है, हम लोग फील भी करते हैं। उन्होंने इस बात का एक एग्जाम्पल दिया और उन्होंने उसका एग्जाम्पल इस तरह दिया कि राजस्थान में एक बार वो रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और अपनी शिक्षाओं के बारे में, अपनी लर्निंग्स के बारे में लोगों से बता रहे थे और उन्हें कोई ऐसा नहीं था, सुन के सब जा रहे थे पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको कुछ दे सके। और फाइनली उन्होंने देखा कि एक मुची, जो कि ये माना जाता था उस ज़माने में कि तुच्छ जाति का है, उसने अपनी एक रोटी निकाल के उनको दी। तो उनको ऐसा लगा और उन्होंने ये कहा, उनको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति पैसे से, शक्ल से अपने इससे बड़ा नहीं होता है, अपनी आर्थिक स्थिति से उसकी में कितनी मानवता है उससे वो उसका बड़प्पन नापा जाता है। तो मेरा यही सिर्फ ये विद्यार्थियों से जो यहाँ बैठे हैं उनसे यही था कि हमें स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, जो आज का जन्म दिवस है उनका, इसमें एक शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए कि हम उनकी जो लर्निंग्स थी उससे कुछ सीखें और हम आगे देश के बारे में प्राण करें। एक उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही थी वो मेरे हिसाब से मेरे को भी लगता है कि बिल्कुल सत्य है कि जब तक आप स्वयं में विश्वास नहीं रखते हैं, आपको भगवान में विश्वास रखने का कोई राइट नहीं है। until unless you have a faith in yourself, there is no point in having a faith in the God। हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ मांगते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। और एक उनका हर वक्त ये रहा कि दिन में एक बार कम से कम अपने आप से बात करो, क्योंकि यदि आपने अपने आप से बात नहीं की तो आपको आपके जैसे अपने एक एक्सीलेंट व्यक्ति से बात करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक these are the few learnings which we can learn from the experiences and learnings of स्वामी विवेकानंद जी, बिकॉज यदि हम उनकी लर्निंग से कुछ सीख सकते हैं तो हम डेफिनेटली देश के उत्थान में
कुछ कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. VIPS adheres to value-based education and strives to revive, relive, and restore the traditional values while anchoring today's youth to our cultural ethos. What started more than 2 decades back. I know Dr. S.C. Vats, our chairman, needs no introduction. So for us, he's here. I go by the program. Soon after the DG, I'm supposed to speak, so better I take the dais. So the 160th birthday, birth celebration, birth anniversary of Swami Vivekananda. And on this day comes a very joyful news that VIPS becomes NAC grade A++. So I congratulate the entire team led by Dr. Anuradha Jain, who is the Dean for Strategic Compliances, and all our colleagues who have very dedicatedly and devotedly devoted their time to 7 criteria and the whole gamut of exercise that they had to undertake. Swamiji has never ever spoken weak. He never represented the weak. How many of you are strong enough to stand? When I say stand, stand on your own feet and have the strength to stand by your conviction. How many of you can you say with conviction that, yes, I'll stand by my conviction? Well, I don't find that enthusiastic response which I expect on Swamiji's birthday. It's the Swami Vivekananda's birthday. You know what Swamiji said? It is easier said than done. As he said, each one of you can be Vivekananda. But in being Vivekananda, in letter and spirit, and practice, it will take you another 100 years. I can name myself Vivekananda, next day my name will be known as Vivekananda. I can even write Swami Vivekananda. But do I really become one? Do I become a Vivekananda? Swamiji says, at my will, he says, mountains shall crumble and I can drink the whole ocean at my will. What a determination. He has never been a weakling. He has always represented strength of character, which we lay stress upon each day. We are embarked on a mission of man-making, character building, nation building. But how far has VIPS succeeded in inculcating the values that Swamiji preached? And when he says, Uttashtata Jagrata Praptavara Nibodhata, rise so we can stop not till the goal is reached. Swamiji's whole life is one to be lived and not to be talked about. Everyone comes and very routinely reads out his quotes. He is not to be quoted. He is a man to be practiced. And he walks with me every day through these corridors, and I go all around the 3 blocks, and he walks with me.
And he walks with me with all the strength and vigor that a youth should represent. I have never ever recognized weakness. And that's my whole strength. Any challenge that comes, I turn it into an opportunity. I never bow down against the threat. And Swamiji preaches that you learn how to face a brute. You should have the strength of character. We are certainly not having the strength of characters to stand on our own feet. Because anyone who has practiced Swamiji in his life can never be weak in any respect, in any sphere of life, in any walk of life. The very many things which Swamiji preached, but he virtually practiced those preachings which he preached to the rest of the world. He was the one to preach, let's try to blend after his visit to Chicago. He said, let's try to blend the Eastern wisdom with the Western science and to harmonize this culture and bring a whole lot of perfect men who only knows the mantras, the recitation of mantras, but he also knows the modern science, the nanotechnology, the particle physics. The man who knows the space science, but besides that, he should be deeply rooted in the motherland, its culture, its ethos. We often talk of him, but then we don't really represent him. I walk through the corridors, and each time I feel he walks with me. Professor Subbarao sometimes suffers me because I start walking very fast. He doesn't know that he is walking with me. When you walk with vigor. When you talk with assertiveness. Have the strength of character. And then you will become men and women of some unity to this, of being worthy of this nation citizens, of our country's worthy sons and daughters. We must all try and rise to prove ourselves worthy of our motherland, to inculcate her culture, her work ethos. Let's not forget, India has a very rich cultural heritage. Where we learn the modern science, we should not forget there's far beyond the physics. There's a whole lot of world of metaphysics. Swamiji taught both. Swamiji taught both God with form and a formless God. God without form. And he was practicing that. He established an ashram in the Himalayas in Pitaragar district. It's called the Mayavati ashram. It's an Advaita ashram, so no dualism. Me and God are not two entities.
but we are God ourselves. So he rightly put it, each soul is potentially divine. You have to manifest the divinity within by controlling nature, external as well as internal. You may do it by work, worship, psychic control, or by philosophy, or maybe by more than one, but you have to be free from the bondages of ignorance. So let's try to free ourselves from the bondages of ignorance. In the Himalayas, when for the third or fourth time when I went with Swami Tatvananda, he said, we are talking about Swami Vivekananda and we keep preaching about his teaching and his quotes after quotes. But nobody gives a concrete shape to what Vivekananda actually stood for. What Vivekananda stood for making man of character. Are we really shaping man and women of character? Those who can help build a strong nation? Or have you deviated from that path which Swamiji perhaps laid down for us? So in the Advaita ashram at Mayavati, which one British captain, savior, having been impressed by Swamiji's philosophy, he thought of raising a shrine. And when the whole thing was built, 1999, on the 15th December, he dies, having built a shrine. But Swamiji never ever wanted that an idol worship should be done. It has to be the formless Brahm, the divinity within, and you have to manifest the divinity within. You have to experience it. So there, it's a place where you can be in deep contemplation, meditation, and there many people have become very intuitive minds, and they have created world history, I tell you. Roman Roland was one of those who visited that place. And many world philosophers, they went there. Max Muller also went there. It is a place that keeps coming charging on you. And that's where you get the feel of the Himalayas. It's ice-laden peaks, the cellar oak tree, and under a moonlight, we perceived this idea of giving concrete shape to an institution named after Vivekananda. And today it stands. It stands out. There must be 100 plus affiliated institutes of the IP University. There's another hundreds of colleges of Delhi University, Jamia, so on and so forth. But today Vivekananda Institute has established its credentials as an institution with certain scruples. We simply don't want to have another place where teaching is imparted, lessons are handed down. But here life's lessons are given and should be imparted. Let's simply not adhere to the syllabus, prescribed whatever is prescribed in the syllabus. Let's go beyond the syllabus. Let's dispense those fundamental values that will go into shaping a man or making a man or a woman with a strength of character who can contribute to nation building. And there when I went to Mayavati, the ashram, Advaita ashram, no idol is kept there.
They are senior monks of the Ramakrishna order, and there's an editorial office of Prabuddha Bharat, a quarterly magazine published by Swami Vivekananda himself. And all publications of Ramakrishna Mission are edited there. It's a very serene place, thoroughly spiritually charged, and that inspires you to do things higher in life, to achieve greater goals, to set higher objectives in life. So today, being his 160th birthday, let each one of us take a resolve that we should simply not talk of Vivekananda. Let's become worthy of naming him as Vivekananda, as our own, as a very own mentor, as our own spiritual leader. And he was a very practical Vedantist who simply did japam or repetition of the holy name. He went beyond that. He reached out to the people on the streets without their clothing. Our NSS keeps doing some charity, some job, something or the other. But these are all photo sessions. They are not sincerely, their heart doesn't really, it's not with them. They say this is another activity in the series of activities that we are carrying out, and there's another activity, it's another ritual that we are doing. Our heart doesn't bleed for the poor, for the have-nots, for the people without a blanket or a quilt, or even bare minimum clothes to protect them against this punishing winter. Do we really care for that? Photo sessions are being held, pictures are being carried out, documentation, magazines, so on and so forth. And they're delighted if they show it to me, we've done this, and I say, I'm not happy. Because Swamiji said, so long as you don't care for the have-nots. So on his birthday, even today, the whole Ramakrishna order is busy doing Narayana Seva. Seeing each and every being an embodiment of God. And as an embodiment of God, virtual God, they are the virtual God and goddesses. Whole Ramakrishna order, across the country and across the globe, they're reaching out to people who don't have proper clothes, people who can't afford proper treatment, health care. And that's termed as Narayana Seva. Narayana Seva. I am Brahmasmi, Tattvamasi. I am out of that. Yastu sarvani bhutani, atmani anapashyati, sarvbhute cha atmanam tatona visgupsate, yasmin sarvani bhutani atmano bhutvijanata, tatra ko moha ko shoka ekattam anapashyate. Yastu sarvani bhutani atmani anapashyati, sarvbhute cha atmanam tatona visgupsate, yasmin sarvani bhutani atmano bhutvijanata, tatra ko moha ko shoka ekattam anapashyate. He goes beyond the peers opposite. He never recognizes sorrow or happiness, joy. He is beyond joy, beyond sadness. Yastu sarvani bhutani atmani anapashyati. The man who sees him, H capital, in every single individual
in every single living, and it goes beyond that, even the non-living, he sees in him, in that object, living and non-living object, the one who sees him, H capital, and who recognizes that everywhere it is he who resides. The dynamics of time, if you have read a book of Dynamics of Time, what were mountains was upon a wire, they become deserts now. The mountains have been turned into deserts. And now what you're seeing, the sea levels are coming up, and some of your coastal cities may get submerged in water. And then new landscapes will be formed. Somewhere there'll be mountains, and somewhere there'll be some other landscape, because that's time, you know. It's time. So dynamics of time are contours that nature leaves behind. And that's why we say, when everything fails, if human being fails to check corruption, the cosmic will shall prevail. The cosmic will. The ultimate will shall prevail. So let's all try to manifest the divinity within and become creative human beings. When I see children here, I see there's something wrong with the parenting of these children. I formed a disciplinary committee, but it comes from self-discipline. The discipline is a discipline that comes from within. Of course, parents are largely responsible for whatever their children do here. Maybe I'm old-timed out. Maybe I'm not fit for these times. But I certainly see that there is a degeneration of human values. There's a decline in human character. And if this be the rate of decline, what would be India's future? Catastrophes come because divine will, finally the cosmic will prevail. Teacher teaches you with sympathy. Nature teaches you with vengeance. So let that vengeance not be let loose. And 1 month down the line, I may not be with you. In the sense, I have some other plans for me. 22 years, 23 years, good enough a time to invest in anything that you do. I've never said this institute belongs to me. I never had a sense of ownership because I'm somebody else. I'm not to be here, and I should not be here any longer. Because whatever was my purpose, I've done that. Beyond that shall be attachment. Attachment leads to pain, agony, and suffering. I do not want to undergo that misery, that suffering. I know that
I'm indulging in some kind of avoidance, but I feel I'll be more at peace with him and more in his company than the company of not so scrupulous people. So I wish you all the very best on the 160th birthday of Swami Vivekananda, who truly was a prophet and a pathfinder. And certainly, he continues to rule my thinking. He walks with me, he talks to me. And it's he who speaks through me many times. We talk to each other. We have a very intimate connection. 30 years of my medical practice, and then becoming a legislator for 15 years. Then here at the Vivekananda Institute. So it's a journey that, and this journey is to continue and to culminate finally into his realm. Because each one has to take his refuse. God bless you all and wish you all the very best, because I wish you to be repositories of strength and not of weakness. God bless you. May Swamiji bless you. Thank you so much. Thank you so much, sir, for such wonderful insights. It is always our pleasure to listen to you. What started at Advaita Ashram in Mayavati in Pithoragarh in 1997 under a silver oak tree, under the moonlight, it has blossomed and bloomed from a seed to a banyan tree. In order to materialize Swamiji's dream towards nation building, VIPS has been your answer, to which you have so selflessly dedicated yourself. And the corridors of VIPS, I would say, each brick and mortar has the soul and essence of Swamiji. And thank you, sir, for your inspiration. You have always been our inspiration, our leader and the disciple and practitioner of Swamiji in the true sense. And we assure you, all of us here today, this hall, and as parts of VIPS family, that we will stand on our own, on our conviction, on our belief. That's what. I thank all of you today for being here together as part of the VIPS family, adding more grace to this ceremony, and I would request all of you for tea and refreshments in the CIA hall. Thank you.